It starts. So, guys, welcome to day one of the masterclass on serialized inventory management with Easy Ecom. Uh, you know, Interestingly, we have a lot of customers who are on serialized inventory management, who wish to be on serialized inventory management. So we thought a request from a couple of sellers had come, and we thought, why not have a elaborative 10-day, 8 or 10 day masterclass discussing serialized inventory management in detail, covering each and every topic, and bringing in expertise not only from our end but from our peers also. Let me tell you which all brands have joined today. We have people from Abroad Shoes, Red Tape, Wanderlooms, Viraj Enterprises, Zippy, Coty, Sada, Planet Products, Isaac Fragrances, Holisol, Desi Minimals, Kasia, House of Kasia. Then we have people from Samurai Exports, Satya Digitech, which is Dora Dori. We have people from Easy Ecom Co team as well. I am so happy. I'm so happy to have so many people in this call. So very quickly, let me set the context. Let me understand. Let me share with you what all we'll be doing in these 10 days or 8 or 10 days, whatever it is. Let me very quickly share my screen. I'm sure you must have seen this email as well, this Google Sheet as well with the emails. So I have divided the complete journey into more or less 12 chapters, where we'll be understanding what we'll be doing, masters, the configurations, pre-put away, putaways, outward of B2C, B2Bs, STNs, RTOs, customer returns, intra-warehouse movements, and cycle counts as well. And based on the feedback which I have got from the team today after we announced this masterclass, each one of you have come up with a certain expectation कि मुझे cycle count के बारे जानना है, मुझे ये जानना है कि USN types क्या होते हैं, I want to understand कि B2B के अंदर हम outward कैसे manage करेंगे. So guys, I would recommend that you attend these sessions from day 1 up till day 8, 9 or 10, whatever it is, so that in one go you're able to understand the complete detailing of how you could manage your warehouse, your inventory in serialized. So now let me start with why are we having this masterclass? Like I shared, the demand for accuracy, not only from the business, not only from the management, but from the market has also increased. And it is not an accuracy which you people are demanding from Easy Ecom, but it's an accuracy which your customers like marketplaces or your customers on your website are demanding. In the times where we have that 10-minute delivery, that 10-minute delivery cannot happen unless and until you have accuracy in your inventory. I am sure you must have never seen a scenario where you ordered something on Zepto and Zepto tells, oh, this is out of stock, sorry, I cannot deliver it to you. If somebody is able to deliver it in 10 minutes, that means they have huge amount of accuracy or extra inventory into their warehouse. Now, when we talk of extra inventory, it comes with a cost. We cannot have extra inventory for every SKU. We cannot have buffer inventory for every SKU. I had a customer, हमने उनको बोला सर आपके इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए -1 बफर डाल दीजिए. मुझे बोल रहे हैं निखिल जी हमारे ना 1000 SKU हैं, -1 करते करते 1000 पीसेस, 1000 क्वांटिटी हमारे अलग से हमेशा पड़ी रहेगी जो हम कभी सेल ही नहीं कर पाएंगे. तो हमको वो जो आखिरी पीस है ना वो भी सेल करना है, और उस तरीके से सेल करना है कि मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर्स भी ना आए, मेरे जो मैट्रिक्स हैं वो भी ब्रीच ना हो, और मैं पैसा भी एक्स्ट्रा ना लगाऊं. इसलिए एक्यूरेसी जब आपको चाहिए, आपको डिटेलिंग चाहिए अपनी इन्वेंट्री के अंदर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को सीरियलाइज कर दें. देयर इज ओनली वन वे, which is you serialize your inventory. What does serialization of inventory mean? Serialization of inventory is nothing but giving a unique number to each item or each piece of even the same SKU. Let us talk about why do we need to have serialized inventory. So there are fundamentally 3 ways
I'll say 3 ways by which you can manage an inventory. One is by simply, having a count over the name of the items and updating that into the marketplaces or into your channels. The second way is that you have SKUs assigned to each of your items. You have ENs assigned to each of your items, and you manage your quantities, with allocation to those SKUs or ENs. The third way is, which is in the cases of items which have shelf life or expiries, that you have batches assigned to those inventory, those SKUs or ENs. Now let's say we have a case that we are managing our inventory through EN numbers or SKUs, and you sold 100 pieces of those SKUs. Let's say 20 pieces returned. Out of those 20, you sold 5 again. Out of 5, those 3 again returned, and so on. Now Nikhil comes to your warehouse and asks you that, tell me, I picked up a piece and asked you that, tell me how many times this specific piece has been sold and how many times this specific piece has been returned. We'll not be able to analyze that. We'll not be able to analyze how many times that piece has been sold, specific piece has been sold, and how many times it has returned to your warehouse. Now, see, customer is not, इसे ना हमारे देश में कहते हैं कस्टमर और जो हमारा मेहमान है वो भगवान है. कस्टमर ने एक बार रिटर्न करा, दूसरे कस्टमर ने सेम पीस दूसरी बार रिटर्न कर दिया. The third time it is returning, I personally believe it is not the customer's fault. There is something into that piece which you have missed into our quality checks. There is some issue with that piece. Maybe there is dust around it. Maybe it has not been packed properly. Maybe there is a fitting issue. Maybe there are scratches onto it. Something or other issue is there into that piece. Now, how do you identify that? You can only identify if you give a unique serial number to each and every piece of that same SKU. That means I have these 10 glasses. Each of that glass will have a unique number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That way, I will be able to understand and analyze that I sold glass number 5 3 times and it returned 2 times. So fundamentally, this is how serialized inventory management is conceptualized. There is nothing beyond serialized inventory management. When we talk of inventory management, serialized inventory management is the zenith level or the top level of inventory management any warehouse can adopt. Obviously, there are technologies where we could put RFID tags to it. We could put, fancy things to it. But again, RFID tag will also have a unique serial number into it. Right? So any questions so far? You guys can raise your hands and ask me. Let's not make this a sermon from my end. But let's have it a collaborative exercise. किसी प्रकार का कोई सवाल है, please ask. I'll be more than happy to answer at any point of time. Yes, Priyanka, please. सर, एज यू टोल्ड दैट हर SKU के जितने भी हमारे पास में पीसेस हैं उनका एक एक स्पेसिफिक नंबर अगर हम दे दें या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इतने सारे SKUs के फिर इतने सारे पीसेस को हम लोग सीरियल वाइज करेंगे, तो लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो आपने मेरे कॉन्टेक्स्ट को और एक्सटेंड कर दिया है. हम यही समझेंगे कि एक एक सीरियल को हम लोग एक एक ग्लास को सीरियल नंबर देंगे तो हम उसको चलाएंगे कैसे, इतने सीरियल नंबर्स को मैनेज कैसे करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे कैसे. राइट प्रियंका? यस यस राइट, we'll see that during the classes. Yes, somebody from ISAC. Yes, my next question in the context what Priyanka has said, how are we going to sell those units? Are we going to see each and every numbers that we gave them 1, 2, 3 and in order and in the same order do we have to pack them? क्योंकि warehouse में तो क्या होता है, एक bin बना हुआ है, वहां से random सा उठाया और उसको पैक किया. So how are we, this would make very difficult कि जब हम inventory count करेंगे तो हम serial number से कैसे ढूंढेंगे उसको. देखिए, इन्वेंट्री काउंट आप सीरियलाइज से करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आप सीरियलाइज से करेंगे, पिकिंग भी आप सीरियलाइज नंबर से करेंगे.
ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त, जो हम डाउन द लाइन क्लासेस में देखेंगे भी, जब हम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त लेट्स से मेरी पिक लिस्ट के अंदर सेम एसक्यू के 10 पीसेस थे, मैं उठा के ले आया रैक से। अब पैकिंग स्टेशन के ऊपर सिस्टम ने असाइन करा ऑर्डर नंबर 1 के अंदर सीरियल नंबर 1 जाएगा, ऑर्डर नंबर 2 के अंदर सीरियल नंबर 2 जाएगा, 3 के अंदर 3 जाएगा। अब ऐसे तो आप छांटने बैठोगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट, राइट। तो सिस्टम क्या करता है, रियल टाइम में स्वैप कर देता है। एक पिक लिस्ट के अंदर, एक बैच के अंदर सेम आइटम अगर किसी ऑर्डर में लगा, सिस्टम सजेस्ट करेगा कि भाई इसके अंदर ये सीरियल नंबर जाना चाहिए, बट अगर आपने कोई दूसरा स्कैन कर दिया सेम बैच के अंदर, सिस्टम उसको स्वैप कर देगा। ठीक है, तो हम ये बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप दोनों ने पूछे हैं। डाउन द लाइन इनटू द क्लासेस वी विल सी दैट हाउ दैट एग्जैक्टली वर्क्स। Anybody, anything else? ये बहुत अच्छे सवाल थे। No question is invalid for me. Great. Let's move ahead. So guys, जो हमारे डे 1 के एजेंडा में था, सबसे पहले हम मास्टर्स कवर करेंगे। हम समझेंगे मास्टर्स कैसे चलते हैं, ठीक है। और मास्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी सिस्टम। You implement SAP, you implement EasyCom, you implement any ERP, you implement Tally. जब तक आपके मास्टर्स सही नहीं होंगे, तब तक आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने अक्सर देखा है शाहरुख की या किसी और टीम मेंबर की बहस हो जाती है सेलर्स के साथ में कि सर ये तो आपको डालना ही है मास्टर के अंदर। बोलते हैं हमारे पास डेटा नहीं है, हम नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे। लेंथ वेट, जो लेंथ वेट हाइट और डायमेंशन या वेट है, वो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम तो बाद में डालेंगे। एंड फिर मेरी टीम एडमेंट हो जाती है, नहीं सर आप आज डालिए, नहीं तो हमको आप वेव ऑफ दीजिए कि बाद में दिक्कत आएगी। क्योंकि हमको पता है आगे जाके आपने कहाँ फंसना है। आगे जाके आपके एक डेटा पॉइंट ना डालने से आप कहाँ जाके फंसोगे, उसका इम्पैक्ट कहाँ जाकर आएगा वो शायद आपको नहीं पता, बट हमको पता है, क्योंकि हम मोर देन 100 सेलर्स के साथ सिर्फ मेरी टीम काम कर रही है। EasyCom, there are more than 7,000 sellers, but my team is specifically working with more than 100 enterprise level sellers who are having orders. Some are having orders more than 10,000 orders per day, 1,000 orders per day, 5,000 orders per day. तो हमको पता है आपने किस गड्ढे में आगे जाके गिरना है, तो इसलिए हम पहले बोल दिए डालिए। इसीलिए इस मास्टर क्लास की फाउंडेशन भी मास्टर्स से ही शुरू होगी। हम मास्टर्स की फील्ड समझेंगे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। HSN, EN, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को उनके मतलब पता होंगे, बट वील गो इनटू दोस डिटेलिंग्स एज वेल। राइट, सो शाहरुख, इफ यू कुड प्लीज शेयर योर स्क्रीन। शाहरुख इज विद मी, ही विल बी द co-host फॉर दिस मास्टर क्लास। If I could correctly define, he is the master here, I am his assistant here. I am the guy speaking, he is the guy who's running the show. Great. So guys, this is what you see when you open your dashboard onto EasyCom. Now let us very quickly go to masters. Onto the master, the first master which we'll see is the product master. Now into the product master, you will see many fields. Let us open one of the master, Shahrukh. Now here there are multiple fields. उससे पहले हम समझते हैं हमारे प्रोडक्ट टाइप कितने के होते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। There is a product type called simple product, and then there are combos. And then combos में भी दो टाइप के कॉम्बो, फिजिकल कॉम्बो, वर्चुअल कॉम्बो। I assume that you guys are aware about the difference between virtual combos and physical combos and simple products. If not, please Yes. raise your hand. I'll get into detail. ठीक है जी, सबको पता है। फिर दो लाइनों में बताएंगे। सिंपल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है हमारा, उसका कोई कॉम्बिनेशन, कोई कुछ नहीं है। जो कॉम्बोज होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, वर्चुअल कॉम्बो, फिजिकल कॉम्बो। वर्चुअल कॉम्बो इज दैट कॉम्बो विच वी आर पैकिंग or making or bundling the product when the order comes. Physical combo is something which we have bundled or packed together multiple items or multiple quantities before the order has come. That is the fundamental difference. Now into this screen you will see that there is a thing called SKU, and then we have product name, then we have product code, brand, category, material, description. Shahrukh scroll kijiye. Then we have color, size, dimensions, weight, accounting unit, accounting SKU, inventory threshold, product code, MRP, cost, tax rules, EN, UPC, custom fields. Can anybody tell me what is the difference between SKU and EN?
Anybody? What is the difference between an SKU and an EN? No idea. But I'm sure we all must have gone through these words into our everyday life. SKU और EN code. सबको पता होगा. दोनों Yeah, में we go through, but we exactly don't know. हाँ, ठीक है जी. Great. So देखिए, SKU है stock keeping unit. Stock keeping unit. EN है यूरोपियन आर्टिकल नंबर. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे शाहरुख ने डाला IN 1100 to excess, which Shahrukh has put up the SKU, defined the SKU as per his choice. Simply, let's say I assign this SKU to this article as 1001. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई आप जितने ब्रांड्स में है कोई और ब्रांड अपने SKU को 1001 नहीं कहेगा. There can be case ना, that I am also naming it 1001. Ankit also is naming some of his product as 1001. Shravan, Priyanka, or somebody else has also named their product or given an SKU to it 1001. अब क्या हुआ कि आप और मैं, हम दोनों लोगों ने सोचा हम ना किसी मॉडर्न ट्रेड के अंदर हम ये या फ्लिपकार्ट के ऊपर हम प्रोडक्ट डालेंगे, फ्लिपकार्ट बोलेंगे आप हमारा SKU यूज करो. फ्लिपकार्ट वुड से Nikhil 1001 and Ankit also 1001. तो ये तो यूनिक नहीं हुए ना. तो सिंपल सी भाषा में ये हुआ कि SKU जो है वो मेरी घर की खुशी है. मैं उसको कोई नंबर दे रही हूँ, वो मेरा एक प्राइवेट एक इंटरनल नॉमेनक्लेचर हो गया टू कोड द आइटम्स. SKUs are not global. SKUs are not global across brands, across countries or across categories. Repetition हो सकती है. EN number. I'm sure you must have some anybody out of the people we have today, किसी ने EN numbers अपने ब्रांड के लिए खरीदे होंगे. You must have bought EN numbers. Yes, we are using EN numbers, and You we must are, have purchased those EN numbers from somewhere. yes. Right. Why did you purchase those EN numbers? Why had you to purchase? आपको खरीदने क्यों पड़े वो? आप खुद भी बना सकते थे EN number. No, because it gives a leverage. I mean, it helps you out. You can track those, and you can publish those. It is like internationally, like you said, European article number, correct? European article number, the word which you use is international. अब Right. आपका SKU क्या हो गया? It went international. Now your EN, the SKU code or the item code nomenclature under EN is unique. Nobody else on the planet will have that same EN number for their product. Correct. Right? So this is the difference between SKU and EN. EN is also a type of SKU, but it is a global SKU. It cannot be duplicated with any of the other brand, other seller or anybody else. SKU हमारे घर के अंदर हम जो मर्जी लिख दें, EN हम खरीदते हैं क्योंकि ये ग्लोबल बॉडी है जिसने EN नंबर्स की रजिस्ट्री मेंटेन करी हुई है. वो उसमें से आपको नंबर देते हैं. ठीक है जी, आपको 100 चाहिए, you take these 100 EN numbers and paste it on your or assign it to your products. Got it? I hope we have clarity over what is the difference between SKU and EN. Yes. Great. There is another Yes. third thing called HSN. Anybody, what is HSN? High security number. High security number. Very good. Anybody else? It's harmonized systemic number. Harmonized system of nomenclature. Yeah. Harmonized system of nomenclature. We understood what is SKU, what is EN, now what is this HSN? What is the purpose of having HSN codes? HSN is used to classify goods. HSN is used to define a unique number to a category of products. SKU and ENs are for your each product. HSN is for your category of products. Now we have GST in our country, and when the GST Act has been written, there are tax percentage which are defined: 5%, 12%, 18%, 28%. Now the government will not open a EN list and say, okay, this glass will have this much percentage,
this laptop of Apple, this model will have this percentage, or this light will have this much percentage of this model. No, they will assign percentages to the HSN. They will assign percentages to a category of products. तभी आता है ना बजट के अंदर या जीएसटी का जब क्वार्टरली जब मीटिंग होती है, they say that they have increased GST percentage on, let's say, laptops. So that means all type of laptops may be up till a certain amount. That okay, laptops up till 2 lakh rupees will have 18%, above that will have 28% whatsoever. So HSN is a 6-digit uniform code. 6-digit uniform code that classifies more than 5,000 categories worldwide. HSN is divided into chapters. So you have chapters, then into the chapter you have sub-chapter that goes to 4 digits of HSN. And into sub-chapter you have again item categories go up to 6 digit of HSN. होता है ना कभी कभी 4 digit का भी HSN acceptable होता है, 6 का भी acceptable होता है. Why is that so? Because whatever it is into that 4-digit HSN chapter, it comprises of all those 6-digit HSN numbers. I hope I have been able to explain difference between SKU, EN and HSN. SKU, Yes. आपके घर का nomenclature. EN, global item nomenclature. HSN, harmonized system of nomenclature. It is unique identification of category of product. Anybody who wants me to repeat this is a lifetime, I'll say, learning which you'll be having. ये एक ना भी कभी आपने पहले कभी डिस्कस करने की जरूरत पड़ी होगी, ना कभी डिस्कस करा होगा कि भाई EN, SKU और HSN में फर्क क्या है. Anybody who has not got it, I'll be more than happy to repeat it. If everybody has got it, then can I see some yeses and nos into the comment box so that I am able to understand that people have not slept after their lunches? Yes, we understood. Great, great, great. So हमने समझा. अब यहाँ पे आप बोलोगे ये एक और चीज है, प्रोडक्ट कोड क्या है? What is this product code here? जहाँ पे किसी हमारे स्टूडेंट ने SKU बनाया, उसमें लिखा उसका नाम था हीरालाल. So the product code has his name, which is हीरालाल. So product code in EasyCom is meant to capture the SKU of the manufacturer. Manufacturer called a certain item by his own SKU, and you are calling it your own SKU. Now, how do you map it? Supplier SKU or a manufacturing SKU. That is what goes into the product code. You are mapping your own SKU with the manufacturer's SKU. Brand, we understand it. Category, we understand. Material type, finished good, raw material, packing material, whatever it is. Shahrukh, if you could please scroll a bit. And then we have description, color, size, weight, length, width, height. Now, let us understand why weight, length, width, height are important to have in the masters. Can anybody explain to everybody? प्रोडक्ट मास्टर के अंदर वेट और डायमेंशंस डालनी क्यों जरूरी है? Can I go? Yes, please. More than happy. Thank you. So basically, this comes from a approx experience of 4 years now. So basically, your logistics partner is connected to your OMS, correct? And whenever you get an order, the order is then pushed in the logistics, whoever is your logistics partner. Now, this is basically done to avoid any extra charges charged to you by your logistics partner. You need to give out your exact weight, height, and width of your packaging so that the right charges are charged to you and to avoid any conflicts later. Okay, this is a very, very important point. That why we have dimensions and weight assigned to each and every SKU. Anybody else would like to add something more to it? Ankit Dhankar Saab, why do we have dimensions and weight into it? Or anybody else, any other scenario, why do we have dimensions and weight into it? Great, let me explain.
So guys, what she explained is accurate. The moment we have dimensions into our products, and the moment we have couriers integrated with our system, this simply means that your orders would be flowing into the courier system automatically from Easy Ecom. Now, in case you have wrong dimensions, the courier will charge you wrong. You have wrong weight, they will overcharge you for it, and they just need a slight reason to overcharge you. People discover that after a few months. Like she said, this comes from an experience of 4 years. She must have experienced cases where courier companies have overcharged you, right? And that happens because you have wrong dimensions and wrong weight into the product master. There is one more important aspect. The other important aspect is how you store your products into your warehouse. Let's say you want to calculate what is the capacity of your bin through dimensions. You can do that if you have, or the system can do it for you if you have dimensions into your product master. The system can help you analyze what is the weight of the SKUs which are being kept into this bin. So from warehouse management perspective also, having dimensions and weight is very important. I hope everybody is clear. Now, very quickly, let's move on to the next very two important aspects of the product master: accounting unit and accounting SKU. How many out there use Tally? How many out of you use Tally for accounting in your companies? Planet Padux does. Planet Paduk does. Anybody else who uses Tally? Anybody uses any ERP? I'm sure कुछ तो हम use कर रहे होंगे accounting के लिए. Tally, Yes. Busy. We are used ERP Next. Great. ERP Next. Busy. We use Busy. Busy. Great. Zoho. Yes, please. Zoho. Zoho. Great. So now what happens is that the world of ERP and the world of accounting is different than your warehouse. They might call a certain product something else into their accounting system, or might be the accounting system has been set up before you got into the detailing of your items in your order management or warehouse management system. Before you assign EN numbers to it, before you assign SKU numbers to your products, the accounting system existed. And they're punching money into the accounting system by calling it maybe a Borosel transparent glass of medium size, and they're punching in sale and purchase into the Tally. And they have given some other accounting SKU, or they have given some other SKU into their accounting system. Now, when the data will move from Easy Ecom to your accounting system, how would the accounting system know, or how would Easy Ecom know कि मुझे इस SKU की सेल अकाउंटिंग सिस्टम के किस SKU में पंच करनी है? ये मैपिंग लेयर के लिए डिफाइन होता है यहाँ पर अकाउंटिंग SKU. In case it is same, you punch in the same SKU here. In case it is different, you call your SKU something else into your accounting software or your ERP, you punch that into the accounting SKU. And then we have accounting unit. It is mistakenly written one here, but sometimes for GST purposes, we call it NOS. But here into our ERP, we might call it something else. तो जो यूनिट ट्रांसलेट होके अकाउंटिंग सिस्टम में जानी है, वो यूनिट हम अकाउंटिंग यूनिट के अंदर डिफाइन करते हैं. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन टू इट. लेट्स वेरी क्विकली मूव टू इन्वेंटरी थ्रेशोल्ड. Inventory threshold in Easy Ecom is utilized to set the minimum quantity of the product of the SKU. If the inventory of the product or the SKU goes below this inventory threshold, you can get emails configured for it, and you'll get emails that okay, this item, this product is going below this set inventory threshold. I'm sure many of you might be using that feature also. The data for that emails comes from this inventory threshold. Product tax code is HSN. Cost and MRP. MRP is your MRP. Cost is sometimes people ask us कि हमको cost क्यों डालनी है यहाँ पर? हम cost क्यों डालें? हमको नहीं दिखानी cost यहाँ पर.
तो हम कहते हैं आप कॉस्ट अगर नहीं डालना चाहते, यू डोंट वांट टू add your COGS here or your cost price here, enter your transfer price. Transfer price is the bare minimum price which the company has calculated कि मैं इससे नीचे इस आइटम को सेल नहीं करूंगा या सेल नहीं करूंगा. उससे क्या होगा कि सिस्टम के अंदर काफी सारी रिपोर्ट्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स है, कुछ और रिपोर्ट्स है, वहां पर ये कॉस्ट वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. Tax rule is setting your GST tax percentages, and then we have cess EN number which we define, and some custom fields. Custom fields is for the integration. Somebody want to capture more data into EasyCom for a certain product. Maybe I like to capture texture of the product. I can add a custom field. I want to add maybe what type of box this product will have. I can have a custom field for it. So this is how the product master sits into your system. We will not go into detail of how we are creating the product master, whether through a sheet, किसमें क्या भरना है, UI से create करना है, कैसे करना है, वो आप लोगों को भली भांति आता है, और जिसको नहीं आता है वो गूगल कर सकता है EasyCom product master, और product master कैसे create करनी, you can go through it. Shaluk, let's scroll a bit towards the top. I have a question. Yes, please. So the thing about cost price, in case if we don't want to mention COGS, there is another suggestion of mentioning the maximum price that you're going to sell it at, sorry, minimum price that you're going to sell it at, correct? Now, if I do that, one thing is good that yes, it'll directly highlight wherever the discrepancies are. Okay. Second cheese is, will it allow the system, I mean, will there be any problem in the order flowing, anything like that? No, this is for internal computations. That's it. That's it. Okay. And this will be shown in the reports. Yes. Sales report. Yes. Let's understand another very, very important aspect of your product master. EasyCom does not and will not push any data related to product master onto the channel. का मतलब हुआ फ्लिपकार्ट, Amazon, Shopify के ऊपर मैं प्रोडक्ट मास्टर का डेटा वहां पुश नहीं करूंगा. जो है वो यहाँ पर है, यहाँ इनवॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल होगा. अगेन कॉस्ट प्राइस विल नॉट गो इनटू द इनवॉइस. मैं प्रोडक्ट मास्टर चैनल के ऊपर क्रिएट नहीं करता हूं. आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम डाला है, मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि EasyCom मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट नेम अपडेट कर देगा. आपने यहाँ पे टैक्स रेट डाला है, मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि EasyCom वहां पे अपडेट कर देगा, क्योंकि हर एक मार्केट प्लेस का, हर एक चैनल का अपना कैटलॉगिंग का तरीका है. और अगर हमको ये मैनेज करना है कि हमारे एक सेंट्रलाइज प्रोडक्ट का डेटा बैठे, उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं मार्केट में, विच आर कॉल्ड PMS ऑल्सो. You guys can reach out to the team and we'll connect you with a couple of companies who are doing it. One-click creation of product in EasyCom, one-click creation of product in Flipkart, Amazon, Snapdeal, etc. Boom. तो एक सिंगल रिपोजिटरी को कहते हैं PMS. EasyCom आपका PMS नहीं है. Anybody? Any questions onto the product master? None. Great. Then you could also explore some of the tabs available onto the top. You can add multiple images. You could see some data variations, inventory, wholesale inventory, sales, etc. There are multiple tabs onto it. Now, very quickly, let us go on to the next product, next master, which is your category master. The moment you import product master into the system, categories automatically get created, right, Shahrukh? That's how it works. Categories automatically get created based on your product master. अब कभी-कभी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मास्टर में लैपटॉप को, किसी में लैपटॉप L कैपिटल कर दिया, किसी में छोटा कर दिया, किसी में लैपटॉप से पहले स्पेस दे दिया, किसी में लैपटॉप के बाद स्पेस दे दिया. सिस्टम को आपने सेम कैटेगरी देनी है जब आप प्रोडक्ट मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं. In case you have variation, system will create different categories and treat it as different categories, right? Let us very quickly go to the category master. So now you have multiple categories which are created into the system. Let us understand what is the impact of categories and what configurations do we have around these categories. Please open one of the categories. What do we have in the actions? In the actions, we have three things: map to zone,
change expiry manufacturing date, enable IMEI in orders. IMEI is meant for people who are having products which are mobile phones, smartwatches, something else, very rare case. You can map a category to a zone, saying that I can import this I can place this category into this zone only. This happens in case of perishable goods or heavy weight products. That okay, this refrigerator I'll put up into only this zone where I'm keeping refrigerator as palletized. I cannot keep refrigerator into a bin-wise zone, or a rack zone. So you can map categories to the zones based on which system will recommend where to put it away. And then we have change expiry manufacturing date. Let's open that. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनवर्ड एक्सपायरी मोड. इनवर्ड एक्सपायरी मोड के अंदर जैसे ही आपने इनेबल करें, you'll see two options. What is your inward expiry type? Into some products we have manufacturing date and expiry date defined. Into some of the products we have manufacturing date and days to expire. Like onto the perishable goods we see manufacturing date, consume within 7 days. That means it will expire after 7 days. And in some products we have an expiry date. So you set that configuration category wise. It can be overruled by a setting after you enable this into the product master as well. But this is how you set it at the category level. Let's select one of these options, which is manufacturing and expiry date. And after you set this, system will ask you for manufacturing date and expiry date for this category when you are inverting your product. Very, very important aspect. In case you have existing inventory into the system, then unless and until you move out the complete inventory out of the system, you cannot change this. आपने सिस्टम में इन्वेंटरी इन्वर्ट कर दी और आपने एक्सपायरी मोड इनेबल नहीं करा और अब आप चार एक्सपायरी मोड इनेबल करना है, तो उसका कोई तरीका नहीं है. सिस्टम को कैसे पता लगेगा जो पहले माल है उसके एक्सपायरी डेट क्या बात है, आप एक्सपायरी डेट डालो. सिस्टम बोलेगा पहले सारा फ्लश आउट करो इस कैटेगरी का मटेरियल, फिर इनेबल करने दो. ठीक है जी. Shravan asked a question. I need to know if there is an option to remove an incorrectly created product from the system and add the correct one in its place. So Shravan, unfortunately, we cannot remove an SKU from the system, remove a product from the system, because system assumes that once you have created it and there are transactions allowing to it, तो हम transaction delete कैसे करेंगे? ये ERP आपकी e-commerce business का SKU लिंक हो गया किसी के साथ में, किसी ट्रांजैक्शन के साथ में, तो वो प्रोडक्ट को आप SKU को डिलीट करोगे तो ट्रांजैक्शन तो वो फिर ऑर्फन हो जाएगी ना, वो अकेली ट्रांजैक्शन कैसे पड़ी रहेगी, तो उसको तो मास्टर डेटा चाहिए, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते. फिर भी एक्सेप्शनल केसेस में जहां कुछ हो जाता है तो हम पूरा का पूरा मास्टर फ्लश आउट करवा देते हैं ताकि आप नया मास्टर चढ़ा सके अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो. चालू एनीथिंग टू ऐड हियर? कैसे कोई डिलीट? हाँ, तो हम इनएक्टिव कर सकते हैं एसक्यू को. और अगर लेट्स से कोई कह रहे हैं कि मैंने 1001 एसक्यू मैंने किसी में डाल दिया, अब मुझे उसको 1001 ही यूज करना है क्योंकि मेरा बारकोड लगा हुआ है, तो मैं क्या करूं? उस एसक्यू के अंदर ये डाल देंगे, उस पे चल जाएगा. तो शाहरुख ने एक हैक बताया है. शाहरुख कह रहे हैं कि लेट्स से देयर इज एन एसक्यू कॉल्ड 1001. अब आपको उसका गलत क्रिएट हो गया, आपको उसको चेंज करके या कुछ और आपने नया एसक्यू क्रिएट करा, आपने 1001-A कर दिया एंड उसके EN फील्ड के अंदर आप उसका करेक्ट एसक्यू डाल देंगे, उसके EN डाल देंगे, तो वो वैसे काम कर सकता है. बट सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू डिलीट एन एसक्यू द मोमेंट यू हैव ट्रांजैक्शंस ऑन. Great. Any questions anybody on to the category and product master thing so far? No. Let's move ahead. Let's now move to the other master, which is combo master. Now Shahrukh will very quickly show you कि हम यहाँ कॉम्बो बना कैसे रहे हैं. पहले हम समझते हैं कॉम्बो कितने टाइप के होते हैं. क्रिएट कॉम्बो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ सिस्टम पूछेगा आपने किस टाइप का कॉम्बो क्रिएट करना है, वर्चुअल कॉम्बो, फिजिकल कॉम्बो या POD. POD इज प्रिंट ऑन डिमांड. उस इंडस्ट्री के लिए जहाँ प्रिंटिंग होती है, टी शर्ट बनती है, ऑर्डर आने के बाद हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, या फिर कप्स एंड मग्स होते हैं, डायरीज प्रिंट होती हैं एंड ऑल. सो दैट इज फॉर व्हाट POD इज. Virtual combo and physical combo, like I explained in starting, virtual combo is something कि हमने combo define कर दिया, pack of 3, pack of 4, but हमने pack नहीं करके रखा उसको. Physically वो अलग अलग product पड़े. जब order आएगा
तब मैं वो 3 पीस उठाऊंगा, पैक करूंगा, उसके ऊपर एसक्यू का स्टिकर चिपकाऊंगा, किसी केस में कई सेलर चिपकाते हैं, कोई नहीं चिपकाते, एंड देन वी शिप इट. That is virtual combo. Physical combo is that you made a pack of 3 physically, you picked up 3 items, you packed them and kept them into the bins before even the order came, and you are pushing the actual inventory of physical combos to your marketplaces. That is how virtual and physical combo work. Any questions on to, any confusions on to virtual combo and physical combos? देखिए, अगर नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में नो लिख दो, चलेगा, बट साइलेंट रहना मेरे लिए वो दुविधा वाली स्थिति हो जाएगी कि या तो हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमको जो है इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कुछ हमको नींद आ रही है. ठीक है जी, ग्रेट. सो No questions. Great. So Ronit has asked a question. For example, we need to add a shelf life of 15 days to a product from the date of manufacturing. देखिए, फायदा यही है इस मास्टर क्लास का कि हमारे यहाँ अभी जो इस क्लास में लोग हैं, सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ ना कुछ 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वाले भी लोग हैं यहाँ पर. तो उन्होंने बहुत कुछ करा है, तो उनके यूज केसेस निकल के आएंगे, वो हमारे सबके काम आएंगे. Ronit is asking, for example, we need to add a shelf life of 15 days to a product from the date of manufacturing. As per my understanding, EasyCom moves inventory to near expiry status when 5 days are left before the expiry date. However, what if I don't have the expiry date and want the system to automatically mark the inventory as expired after the 15 days of inverting? देखो, आपके पास expiry date नहीं है, and you want the product to be expired after 15 days, then it's very simple. Days to expire 15. You'd have to enter the manufacturing date at least, Ronit. You have that, Ronit? You can unmute yourself. Do we have the manufacturing date of this item? Ronit, am I audible to you? Hello. Yes. Do we have the manufacturing date of this item? No, sir. Actually, मेरा doubt ये था ना कि take an example, I am inverting in stock today, okay, which have a shelf life of between, take an example, 15 to 25 days. Okay, so I don't have the fixed expiry date by the brand. So मेरे को बस ये चाहिए कि like आज मैं अगर invert कर रहा हूँ तो between like 15 to 25 days जब उसको hit करना हो तो near expiry चला जाए. But EasyCom क्या कर रहा है, अगर if I am filling the date shelf life of 15 days, so वो 5 दिन पहले से ही उसे नियर एक्सपायरी पोर्शन में डाल देता है. देखो, अब सिस्टम ये तो 15 to 25 डेज हमारा एक रेंज हो. लाइक टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बताऊं, इफ आई एम इन्वर्टिंग द स्टॉक एट 1 February, ओके, एंड आई सेट द शेल्फ लाइफ फॉर 15 days, so it would be expire on 15th February, but EasyCom उसे 10th February को ही नियर बाय एक्सपायरी में डाल देता है. नियर एक्सपायरी में डाल देगा ताकि आप उसको जल्दी आउट कर सकें या कुछ कर सकें. नहीं, वो नियर एक्सपायरी वाला फिर ना ऐड नहीं होता है उसमें. क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें साइन नहीं होता है वो इन्वेंटरी. नियर एक्सपायरी असाइन नहीं होगा. अगर नियर एक्सपायरी आ गया तो सवाल ये है कि मैंने 15 डेज एक्सपायरी डेज टू एक्सपायर सेट करा, और अगर वो 28 डे से नियर एक्सपायरी आ जाएगा तो मैं सेल नहीं कर सकता. मेरा 30th जनवरी को, ठीक है, और मैंने इसमें डिफॉल्ट शेल्फ लाइफ आउटवर्ड शेल्फ लाइफ डाला 15 डेज. ठीक है, अगर वो 15 जनवरी क्रॉस हो जाती है डेट तो वो नियर एक्सपायरी जैसे है. तो नियर एक्सपायरी मतलब जितना आपने डे सेट करा है उसके बाद शुरू होता है, पहले नहीं शुरू होता है. तो रोनित, ये एग्जांपल आपको अलग से एक बार शाहरुख के साथ या टीम मेंबर के साथ लेके बैठना पड़ेगा. एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने 1 Feb को इन्वर्ट करा प्रोडक्ट और आपने डेज टू एक्सपायर 15 सेट करा है, तो 15 February के बाद वो नियर एक्सपायरी पर आ जाएगा, 15 से पहले नहीं आएगा. हाँ, वही इशू आ रहा है सर कि वो 5 days अर्लियर ही उसे नियर एक्सपायरी में डाल रहा है. ये आप अलग से लेके एक बार बैठिएगा. लेट अस इन्वेस्टिगेट आल्सो ये क्या केस है, क्या सेटिंग कॉन्फ़िगर्ड. ओके, डन है. ग्रेट, आगे चलते हैं जी. लेट अस वेरी क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट मास्टर which is your tax master. Into the tax master, you define your tax percentages. There are certain items like into apparels that up till 999 it would be 5%, beyond 999 it would be 12%.
and there are some items which have again staggered rates of percentages based on money. So here is where we define the tax rules or the tax percentages which are applicable onto the products and are linked with the product master. तो कोई एक टैक्स रूल खोल के हम फटाक से दिखा देते हैं किस तरीके से ये सेट होता है. ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट प्राइस कर सकते हैं टैक्स रूल के अंदर कि हमारा सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर एक और ऑप्शन आता है, ये हमारा यूनिट प्राइस है. यूनिट प्राइस का ऑप्शन क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एक्सक्लूडिंग टैक्स रेट. सेलिंग प्राइस इज इंक्लूडिंग टैक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप टैक्स रूल किस पे लगा रहे हैं? अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स. So if it is excluding tax, you have to select unit price here. If it is including tax, you have to set selling price here. ठीक है जी, you select selling price here and then you can define that from 0 to 100 it is going to be 12%, and from 100 to maximum it is going to be 18%. And then you select this tax rule, which is tax 18 underscore, into your product master, and it would automatically work this way. That system will automatically assign that percentage when it is creating the invoice in Easy Ecom. ठीक है जी, any questions on to tax master? Very simple enough. We can proceed if there are no questions. Somebody unmuted. हाय, मुझे ये जानना था कि जैसे अभी हमारा मार्केट प्लेसेस पे और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका पीओ हम क्रिएट करते हैं उसके हम डिफरेंट कॉस्ट रखते हैं, जैसे कि 18% होता है, 12% होता है, और मार्केट प्लेसेस के लिए भी 18% होता है अगर वो 1000 के ऊपर होता है तो. बट इन केस अभी जैसे मैं पीओ बना रहा हूँ और पीओ में मुझे 12% का टैक्स लगाना है, तो अगर मैं सिस्टम में आपने जैसे ये बना के रखा है जैसे टैक्स 12%, GIF टैक्स @12% सेलिंग प्राइस, तो ये हम अलग से बना सकते हैं जो कि इफेक्ट नहीं करेगा मार्केट प्लेसेस को, राइट? देखिए, ये जो टैक्स रूल डिफाइन हो रहे हैं सेलिंग के लिए डिफाइन हो रहे हैं, इनवर्डिंग के लिए नहीं. ओके, तो ये सामान बेचने के लिए कॉन्फ़िगर हो रहे हैं. अब यहाँ पर एक केस आता है जो कि 2-3 सेलर्स के साथ बहुत डिटेलिंग में हम लोग गए हैं कि अब यहाँ पर जो परसेंटेज सेट करी गई है वो सेट करी गई कि इजी इकॉम किस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने इंटरनल टैक्स रिपोर्ट और सेल डिटेल रिपोर्ट बनाएगा और अपने इंटरनल इनवॉइस कैसे हम क्रिएट करेंगे. अब मानिए कि आप पहले तो श्रवण, ये मैं क्लियर हूं ना कि इनवर्डिंग का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये सेलिंग के लिए है. अंडरस्टूड. ठीक है जी, अब आगे चलते हैं. एक बहुत पेक्यूलर केस आता है और ये केस पकड़ा भी गया है. फ्लिपकार्ट ने क्या करा कि एक आइटम लिया, उसका टैक्स परसेंटेज था 12%, लेट्स से 18%. अब उसको उन्होंने क्या करा कि उसका सही जो HSN के हिसाब से परसेंटेज होना चाहिए था वो 18% था, या लेट्स से हम एग्जांपल पकड़ते हैं HSN के हिसाब से 12% था. फ्लिपकार्ट ने कस्टमर को चार्ज कर लिया 18%. फ्लिपकार्ट ने इनवॉइस जो जनरेट करा था, इनवॉइस विच फ्लिपकार्ट जनरेटेड, फ्लिपकार्ट रोट देयर 18%. बट जब इजीकॉम में वो ऑर्डर आया एंड इजीकॉम डिड द कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ पे 12% सेट है तो इजीकॉम ने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी. दैट सिंपली मीन्स कि आप जो अपनी जीएसटी रिपोर्ट बनाओगे वो इजीकॉम के डेटा के बेसिस पे बना रहे हो, राइट? आपने मल्टीपल मार्केट प्लेस का जीएसटी का टैक्स रिपोर्ट एक्सपोर्ट करा, विच इज यू आर यूटिलाइजिंग टू मेक योर टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट्स. इजीकॉम गेव यू अ रिपोर्ट ऑफ 12% GST into that order, whereas the invoice which Flipkart gave to the customer was of 18%. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कस्टमर से GST ज्यादा ले लिया, फ्लिपकार्ट ने ज्यादा ले लिया, बट आप सरकार को सिर्फ 12% दे रहे हो. 6% सरकार की भाषा में हम पॉकेट कर रहे हैं. ये एम्बिग्विटी, ये केसेस पकड़ाए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स भी हुआ है कि आप HSN के ऊपर 18% था, इजीकॉम ने 18% कैलकुलेट कर दिया, मार्केट प्लेस ने 12% के ऊपर कस्टमर को इनवॉइस कर दिया.
तो आपने 6% कस्टमर से कम लिया और अपनी पॉकेट से सरकार को आप 6% ज्यादा दे रहे हैं। ये केसेस आए हैं सामने। अनफॉर्चुनेटली फ्लिपकार्ट हैज नॉट given a solution or a reason for it. They have been into denial mode also with a couple of sellers कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, डेटा प्रेजेंट करा गया, we'll look into it and all. अब बात आती है कि आप क्या करेंगे इस केस में, आप क्या करेंगे? कोई anybody who could share their views in this case, what would you do? What would you file into your returns? The right answer to it is that we should file what is the right percentage as per the HSN number or as defined by the government into the HSN chapter. And we should raise a case and we should take this up with Flipkart that why are you charging wrong percentage to the customer? This is a very, very important aspect. आई एम श्योर आज ये बात सुनने के बाद में आप भी अपना फ्लिपकार्ट अमेज़न का डेटा खोलेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई आपको केस मिलेगा। सो वी शुड कीप आवर बुक्स क्लीन इज व्हाट इज माय व्यू और व्हाट इज EasyCom's take on to it, that we should keep our books clean as per the tax rates defined on what we are selling. What marketplace has done should be reported to it and should be asked them to correct it. Yes, Shravan. सर ऐसा है ना कि अभी मैं क्या करता हूँ कि एक ही सिस्टम है हमारे पास EasyCom, और वहीं से हम PO भी बना रहे हैं, वहीं से हमारा मार्केट प्लेसेस भी लिंक है। तो हमारा क्या होता है कि हमने नंबर्स ऑफ रुपीस के ऊपर ऐसा करके रखा है कि 1000 के ऊपर अगर जितने भी अमाउंट के जो भी प्रोडक्ट हैं वो 18% पे चार्ज होंगे, जैसा कि गवर्नमेंट टैक्स रूल है, और उसके नीचे वाला जितना भी है वो 12% पे चार्ज होगा। तो अभी हम PO भी वैसे ही बना रहे हैं एंड अभी हमारा जो मार्केट प्लेसेस का जो भी है वो वैसे ही रन कर रहा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो EasyCom हमें प्रोवाइड कर सकता है कि PO के लिए आप ये परसेंटेज यूज करो, या कैटेगरी में ही साथ अपडेट करके हम कर सकते हैं। नहीं देखिए, PO के अंदर PO के अंदर जो टैक्स परसेंटेज वगैरह लगती है वो इसी टैक्स मास्टर से आती है। इनवर्डिंग और आउटवर्ड के लिए हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कुछ कैटेगरीज होती हैं हमारे देश में ऐसा कि वो जब आप परचेज कर रहे हो तो वो आप डिफरेंट परसेंटेज पे परचेज कर रहे हो क्योंकि आप उसका कुछ नाम और है, और उसी प्रोडक्ट को जब आप बेच रहे हो तो आप उसको कुछ और वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हो तो वो उसका प्रोडक्ट ही बदल गया, अब आप पे परसेंटेज अलग हो गई बट फिजिकली सेम है वो। यहाँ कह लीजिए कि चावल में इकट्ठे खरीद रहा हूँ 100 किलो गनी बैग्स के अंदर, तो उसका टैक्स परसेंटेज अलग है हाइपोथेटिकली, और जब मैं उसको आधा किलो 1-1 किलो करके बेच रहा हूँ तो उसका टैक्स परसेंटेज अलग हो गया। श्रवण ऐसे ही कुछ कह रहे हो ना आप? राइट सर। तो यहाँ पे भाई आइटम के ऊपर टैक्स परसेंटेज तो अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइप का सेट हो सकता है। आप इनवर्डिंग करते वक्त टैक्स परसेंटेज अलग डिफाइन करना कोई तरीका है हमारे पास? नहीं है जी कोई तरीका। ये पेक्यूलर और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई तरीका नहीं है जी हमारे पास फिलहाल नहीं है। देन जो भी हम करंटली यूज कर रहे हैं जैसे कि 1000 के ऊपर 999 के ऊपर जो भी 1000 का अमाउंट होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली GST 18% होता है, तो हम वैसे ही जो चल रहे हैं फिर वैसे ही चलाना पड़ेगा, राइट? वैसे ही करना पड़ेगा। आई थिंक जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है वो तो ऐसे ही ऑपरेट कर रही है जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। मे बी हम ऑफलाइन एक केस आप मेरे को या टीम को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम आपको देते हैं कि क्या करना चाहिए उस स्पेसिफिक केस के अंदर। बट एज फार एज फंक्शनैलिटी इज कंसर्न, फंक्शनैलिटी सिंपल है कि टैक्स मास्टर एक ही है जो सिस्टम अक्रॉस चले। ओके, नोटेड। सोनू शायद आप कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर ही टैक्स डिपेंड कर सकते हैं ना बस? हाँ जी बिल्कुल, प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं। कैटेगरी के ऊपर थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ही कर सकते हैं, कैटेगरी के ऊपर नहीं। प्रोडक्ट के ऊपर ही। ठीक है सर, आगे बढ़िए। मेरा भी सपोर्ट सिस्टम मेरे सामने बैठा है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ।
ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं टैक्स मास्टर से आगे. We'll spend 15 more minutes into the call and we try to cover very quickly the balance masters. Let's now jump on to the zones and the bin master. तो इस डेमो अकाउंट के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने एकेडमी का अकाउंट है, बहुत सारे बिन्स क्रिएट करके रखे हुए हैं. तो यहाँ पे आपको एक न्यू बिन मास्टर का एक रेड रिबन आता है, क्लिक हियर टू नेविगेट, विल गो टू द न्यू बिन मास्टर. चलिए समझते हैं तब तक हम जोन्स और बिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं. कैन एनीबडी हेल्प मी विद एक्सप्लेनिंग difference between zones and bins? We have a lot of experts into the warehousing here. Zones और bins में क्या फर्क है? As per my understanding, what we are having here, zone is a bigger area, and where we have created bins. And bins, for example, let's suppose we have created multiple zones like home fragrance zone, personal fragrance zone, floor cleaner zone, right? And then in zones we have created multiple bins like fragrance A, fragrance B, fragrance C, and like zones are the bigger area and the bins are sub areas where the products are stored, Actually, great. Where the physically products are kept into a smaller designated area into the zone, right? Correct. Right. Now, I have another additional question on to bins are created within the zones, right, Sohan? Zones अलग-अलग क्यों बनाई जाती हैं? Zones अलग-अलग बनाने की need क्या है? To make it more organized, where the packer is supposed to go, मतलब कोई confusion ना create हो. ठीक है, और क्या रीजन हो सकते हैं जी जोन अलग बनाने के? Pick list easy हो जाए, inventory organize हो जाए, so the system knows, where to pick the inventory and from where to make it out, मतलब minus the inventory. ठीक है, वो तो बिन से भी हो जाएगा, बट जोन दो अलग अलग क्यों बनाऊं मैं? मेरे को कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको. आई वांट समबडीज एग्जांपल कि जोन हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं. जोन इसलिए अलग अलग बनाया जाता है फॉर इन्वेंट्री का जो बाइफरकेशन होता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बिजनेस और दोनों इन्वेंट्री अलग अलग रखते हैं. सो वो लोग जोन्स क्रिएट करते हैं. जोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग और पिकिंग पे. मान लीजिए आपने मार्केट प्लेस या कोई भी अपना शॉपिफाई की साइट को आपने जोन 1 में डाला है, तो दी पिकिंग विल बी हैपनिंग फ्रॉम जोन 1 ओनली फर्स्ट. अगर जोन 1 में वो मटेरियल आपका सेफ्टी स्टॉक को पार कर गया है या क्रॉस कर गया है, उसके बाद वो ऑफलाइन या बल्क बिन्स की तरफ जाएगा. जोन्स आप अपनी कैटेगराइजेशन के बेसिस पे भी बना सकते हैं. जोन्स आप अपने प्रोडक्ट की स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग कैटेगराइजेशन पे भी बना सकते हैं. निखिल जी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. वेरी परफेक्ट अंकित जी. बल्क जोन, ईच जोन, एक सिंपल सा हम उसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन कि एक ऐसी जोन जहां पे मेरे पास सामान आ रहा है. लेट्स से आई एम गेटिंग दिस मोबाइल फोन एंड आई एम गेटिंग 1000 पीसेस एंड एवरी कार्टन इज हैविंग 100 पीसेस. आई एम हैविंग अ बल्क जोन जहां पे मैंने कार्टन रखे हुए हैं. जब एक कार्टन खुल गया तो मैं उसको ईच जोन के अंदर ले आया और मैंने सिस्टम में प्रायोरिटी सेट कर दी कि मेरी पिकिंग पहले ईच जोन से होनी चाहिए, जो सामान कार्टन खुल गया है, उसके बाद उसको बल्क जोन से लेना चाहिए. तो ये फंडामेंटल हमारा डिफरेंशिएशन है. बल्क जोन, ईच जोन के माध्यम से हम जोन्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक दो एग्जांपल और हो सकते हैं कि कुछ लोगों के वेयर हाउसेज में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं. रेफ्रिजरेटर मतलब सामान होता है जो फ्रिजेस के अंदर रखा जाता है, पेरिशेबल गुड्स, टेम्परेचर कंट्रोल्ड गुड्स कहते हैं. बेसिकली ये कन्फेक्शनरीज और आपका कॉस्मेटिक्स में होता है. करेक्ट. तो उन्होंने क्या होता है, कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, दे हैव अ सेपरेट सेट कि ये जो प्रोडक्ट, ये आर्टिकल्स जो होंगे, दे वुड बी स्टोर्ड बिटवीन 18 to 20 या 18 to 22 डिग्री सेल्सियस. उनको मेंटेन करने के लिए आपको बिन भी अलग बनानी पड़ेगी. उनको मेंटेन करने के लिए आपका स्टोरेज एरिया भी अलग होगा. कोई 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोरेज एरिया बनाता है, कोई 5,000 स्क्वायर फीट का बनाता है. सो द बिन्स कैन नॉट बी सेम. बिन्स आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं आ सकती है. आप ए पे शुरू करें और जेड पे खत्म करना होता है आपको. करेक्ट. तो ये जोन्स का आई होप आप सबको
रियल लाइफ एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा कि जोन्स हम अलग अलग क्यों बनाते हैं। एक केस हमने पकड़ा ईच जोन बल्क जोन, दूसरा आइटम कैटेगराइजेशन के हिसाब से कोई रेफ्रिजरेटर आइटम है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो हमने उसको अलग जोन बना दिया। या फिर कोई हमारी ऐसी जोन होती है जहाँ पे हमारा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बल्क मटेरियल है, उनका साइज बड़ा है, तो हमने उनकी अलग जोन बना दी कि ये वाला बल्क साइज वाला आइटम जो है इसी जोन के अंदर रखा जाएगा। बट एज फार एज WMS इज कंसर्न, WMS ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है, वहां पे जोन की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं यहाँ कि ये मेरी जोन 1 है, ये मेरी जोन 2 है, ये प्रायोरिटी 1 जोन है, ये प्रायोरिटी 2 जोन है। तो सिस्टम पहले ऑर्डर असाइन करेगा प्रायोरिटी 1 जोन को, ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो इन्वेंट्री तो दोनों की प्लस करके भेज देगा। System will add up the inventory of both the zones and send it to the marketplace if you have exposed it into the EasyCom. But if you have set the priority to a certain zone, system will assign the inventory or the orders to that zone first, and if the inventory is not available into that zone, priority 1 zone, that is when it will move it to the next zone. Any questions, anybody, before I move on to the detailing of the bins? Shahrukh, if we could click on zones, कि zones कैसे बनाते हैं? Zones ऐसे बनाते हैं, each zone, bulk zone, bad zone. Recently आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे मैं bad zones define कर रहा हूँ। पहले EasyCom में फंक्शनैलिटी नहीं थी कि आप you could only store the good or you could put away only the good material. How do you manage your bad material? Now we have bad zone where you could store your rejected material, repair material which is not sellable. The item which are not sellable goes into the bad zone. Sellable ones go into each zone or bulk zone. You can define the name of the zone and give it a priority. Okay, this is how you create a zone. Next, let's very quickly understand how we create bins. Now bins you could simply create, you'd have to select the zone type, you'd have to select the zone name which we have created. You give it a name, you define the capacity, length, width and height. Remember, we defined length, width and height into the product master. Here we are defining length, width and height into the zone also, so that system can suggest, कुछ ऐसे फीचर्स और बन रहे हैं पाइपलाइन के अंदर है, सिस्टम कैन सजेस्ट कि इस बिन के अंदर इतनी मटेरियल आ सकता है, या इस बिन के अंदर अब और आप मटेरियल पुट अवे नहीं कर सकते हैं, वेट ज्यादा हो जाएगा तो बॉक्स खराब हो जाएगा, ऑल देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट. And you can also define the preferred product category into the last drop down of the bin, which is you can define which preferred category of product will go into this bin. If you take your mouse onto the I, the help button, it will tell you you can map up to 20 preferred categories per bin. सिस्टम ऑटो पुट अवे के लिए सजेशन देगा कि ये कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आप इस बिन के अंदर रखिए. ये उस ऑटो सजेशन के लिए आपको यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं which preferred product category you like to store into this bin. You can create it through CSV and all those things, right? We'll not get into that detail. Let's move ahead. Let's move ahead to the next part, which is, you know, pigeonholes. एक यहाँ पे टर्म है pigeonhole. Pigeonhole एक एडवांस टर्म आ जाती है जो हम कवर करेंगे आखिरी में जाके. अभी मैं समझाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वेरी रेयर केस है. आई थिंक जितने हमारे कस्टमर्स हैं उसमें ई कार्ट के अंदर पिजन होल्स यूज होते हैं. हम इसको आखिरी में पिकअप करेंगे. नया कॉन्सेप्ट है, इससे दुनिया बदलती है, जहाज बदलता है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है. इसको बाद में कवर अप करेंगे. विल पिक दिस अप लेटर. So you can map your bins with SKUs also. You have an option there. Map bins with SKUs. You can say these specific SKUs can go into these bins. System auto suggest करेगा. ठीक है जी. Any questions on to zones and bins? No question. No questions. Great. Great. So let's guys now very quickly move on to the other master, which is your customer and vendor master. Customer and vendor master. Just yesterday, a new client who was getting onboarded asked us कि मैं तो खुद की फैक्ट्री से माल बना रहा हूँ और मुझे ये वेंडर क्रिएट करने की जरूरत क्या है, मुझे कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत क्या है.
तो वो हम फटाक से समझते हैं, फटाफट समझते हैं कस्टमर वेंडर मास्टर कंसेप्चुअली है क्या। देखिए, कस्टमर मास्टर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. One is your wholesale customers, the other is your STN customers, and third is your POS customers. You guys must have used wholesale customer and STN customers, but I'm sure none of you must have used, or very rarely one or two must have used POS customers. POS is, there is a small POS into EasyCom, उसके लिए बना हुआ है. Wholesale customers are customers which are selling in bulk, be your distributors, your wholesalers, and all. And STN customers are the basically your own additional place of business or your company's own location where you are transferring the stock, right? That is how we define the STN customer. So now when you create a customer, there are multiple things. Let's very quickly create a customer. Here you define the company email password. लोग पूछते हैं email password डालने की क्या जरूरत है? अब EasyCom में फंक्शनैलिटी कि आप अपने कस्टमर को एक पैनल दे सके, अपने वेंडर को एक पैनल दे सके, जहां पर वो लॉग इन करके अपने ऑर्डर्स और परचेज ऑर्डर्स की विजिबिलिटी देख सकता है. एडिशनल फीचर है, इसलिए यहाँ पे ईमेल पासवर्ड चाहिए, जीएसटी नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा हमने डाल दिया. नीचे आता है और चलिए बिलिंग क्रेडिट डिफाइन कर दिया हमने. यहाँ पे आता है कैंसिल क्वांटिटी ऑर्डर पार्शियली फुलफिल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी क्रिएटेड a B2B order into the system for a customer, and we say that out of 100 only 80 have been fulfilled, and we want to automatically cancel the quantity of the order which has not been fulfilled. This setting is meant for it. Send email post invoice generation. Invoice generate होने के बाद मेल भेजना है, उसके लिए ऑप्शन है invoice term. Select invoice term. Into this drop down you say delivered at place, delivered duty paid. This is a very specific case where we use, how do we use this example? Yes, export के case में ये use होता है invoice term. Some of the customers use that. If what should be the invoice terms mentioned onto the invoice, which is DAP or DDP, delivered duty paid. This is meant for exports, right? So this is how you create your customer. And then let us very quickly see how we create a, I think Shahrukh, we had that option of linking price list with the customer. Pricing master के अंदर है ना वो, ठीक है, वहां से देखेंगे. ठीक है जी, very quickly now let us check the vendor master as well. Now onto the vendor master, let us create a vendor master very quickly. We'll create a vendor, add new vendor. You define the vendor code, which is very important thing. First name, last name, email, सब कुछ आपने define करना है. नीचे scroll कीजिए, आखिरी में चीजें आती हैं restocking rules. This is meant for certain reports to calculate the forecasting of the purchase and forecasting of the forecasting reports के लिए. Number of days the vendor takes to prepare the product. Number of days the freight forward takes to ship the product. Shipping time to reach the product. Time for the warehouse to check in the items. आपके डॉक पे लग गया, आपके गेट पे लग गया ट्रक, उसके बाद आपको कितना समय लगता है आपको प्रोडक्ट को लाइव करने के लिए, वो आपने टाइम फॉर दी वेयर हाउस कर दिया. ये फैक्टर्स अगर आप डिफाइन करते हो तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पे आपको फोरकास्टिंग में मदद मिलेगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करने में मदद मिलेगी, रीस्टॉकिंग रूल्स डिफाइन करने के लिए मदद मिलेगी. दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड एक्सप्लोर. You should go on to the knowledge base of EasyCom also and check out restocking rules. ठीक है जी? Yes, please. Sorry, I have a question. What if the same vendor takes different time or different turnaround time to manufacture different types of goods? जैसे एक वेंडर है जिसको 10 दिन लगता है एक पर्टिकुलर टी शर्ट बनाने में, बट उसी वेंडर को 25 दिन लगते हैं कोई और प्रोडक्ट बनाने में. Right, Devina, I think that's a very valid use case, and this is how ERPs work. You define the lead time on the item, not onto the vendor. And based on the item, you are then able to calculate what is the restocking number or restocking value for this item. Now, I don't think we have restocking rules onto the items so far. We just have onto the vendors till now.
Correct. That is a feature. Having something onto the roadmap that they will delegate these things from the vendor to the items also, but that would happen again. That would happen. The same item might be coming from different vendors. फिर क्या करेंगे हम? Right. So those are permutation and combinations. There are certain things onto the roadmap as well, but as of today, you can set this onto the vendor level. Okay. Thank you so much. Ankit ji, you are saying something. मैं ये कह रहा था, ये जो देवीना ने अभी पूछा था, सो दिस इज लाइक आप अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर किसी बॉम्ब के अगेंस्ट में कोई प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हैं WMS में, सो आपका वहाँ इन टर्म्स ऑफ मैन डेज या मैन पावर यूटिलाइजेशन और मटेरियल रिसोर्सेज के अगेंस्ट में आपका जो स्टॉक होता है उसके अगेंस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है, यू आर गोइंग टू क्रिएट इट इन 30 days, 10 days, 15 days. तो वहाँ मैन डेज और मैन आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं. Right. Correct. Great. ठीक है जी. So onto this vendor master, we have a couple of more options. Shahrukh, if you go to the hamburger button again. Map SKU list. So you can map onto the vendor SKU, bulk map vendor with SKU. First option. Here you can map the SKUs with the vendors that, okay, I am going to procure these products from this vendor. This helps when we ask the tech to enable automatic PO creation. एक फंक्शनैलिटी होती है सिस्टम में कि आप ऑटोमेटिक पीओ बना सकते हैं. अगर आपने मैपिंग डाल के रखी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस वेंडर के नाम से सिस्टम में एक पीओ रिलीज कर देगा जो आप प्रिंट करके अपने वेंडर को भेज सकते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Very quickly, last master of the day which we'll have a look at is the pricing master. Pricing master is meant for your customers. आपने डिफाइन करा कि मेरी 100 रुपए MRP है, 40% डिस्काउंट दूंगा मैं होलसेलर को, 25% डिस्काउंट दूंगा मैं रिटेलर को. कस्टमर ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे आप आइटम वाइज परसेंटेज डिस्काउंट या फिर आइटम वाइज रेट डिफाइन कर सकते हैं. उस कस्टमर उस प्राइस लिस्ट को आप उस एक प्राइस लिस्ट बना के कस्टमर ग्रुप के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं. ये रेट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना होता है. बिल्कुल जी, कि हमारा किस टाइप के कस्टमर के ऊपर क्या रेट से हम आइटम को सेल करेंगे. सिस्टम ऑटोमेटिकली प्राइस लिस्ट के हिसाब से ऑर्डर के अंदर उसका रेट डाल देगा. बिल्कुल ठीक. Anybody, any questions so far on to vendor master, customer master and pricing master? Can you just repeat pricing master once again, please? Let us go to a price list one. Pricing list. यहाँ पे हम create कर दिया, इसी को edit कीजिए आप 40% डिस्काउंट को. आप एक नई प्राइस लिस्ट क्रिएट कर दीजिए. Add new list. हमने एक लिस्ट क्रिएट करी 50%. एक प्राइसेस हमने ऐड कर दी. अब 50 के अंदर किसी भी प्राइस को प्राइसिंग लिस्ट टैब किसी को भी एडिट कीजिए और आप ये नीचे आगे इसके अंदर अपलोड प्राइसिंग कर देंगे. हम जब हम अपलोड प्राइसिंग करेंगे तो हम SKU वाइज इसके अंदर प्राइसिंग डाल सकते हैं कि इस SKU को मैं किस रेट के ऊपर सेल करूंगा. इस कस्टमर इस प्राइस लिस्ट के अंदर आपने प्राइस लिस्ट डिफाइन कर दी, क्योंकि 50 प्राइस लिस्ट दिस SKU will have this much selling price. And now once we have this price list, we will map it with a certain customer group. Close this and please go to the customer group. Now here we can define edit customer group. Which price list is mapped with which customer group, or you can simply define the group discount as well. Okay, thank you. Great. So guys, any more questions on to vendor, customer, or this price list, pricing master? Yeses and nos. एक ब्लू और एक पर्पल कर No. दो इसमें. No. Anybody else? Any other question we have so far today covered into the masters, product master, category master, combo master, tax, zones, bins, customer, vendor. We have covered all these things.
any questions which you have? No, thank you. No questions, guys. So I think we should end today's session. Tomorrow, not tomorrow, but on Monday, we'll be moving towards serialized configuration. Understand the different USN types, what adjustments are enabled, and how the printer and the barcoding paper things, barcoding settings are done, paper pick lists are set. We'll cover all these things onto Monday, and if time permitted, we'll pick up one or two things more from the next session. Like I'll be rolling marketplace listings and mappings towards the next session, which is into the chapter 2 or of day 1. We'll be rolling that into the next session. किसी का कोई सवाल कुछ जो आप चाहें पूछना? Great, thank you. Yes. I have one question. Will we be given recordings of these sessions? Well, Davina, yes, I am recording this session, and I'm planning to put this onto YouTube itself so that it is available for everyone. Great. Thank you so much. Really helpful. Great. Shahrukh, I think you can stop your screen. And guys, let us wrap up today's session. And I thank each one of you for joining up till the last minute. And we will be taking this masterclass forward on Monday, same time, 2:30 p.m. You guys can share. You'll get a feedback form onto your WhatsApp messages after today's session. You can share your feedback onto it. Anything else or any change of method of discussion you want, or any other input you would like to share onto that feedback form. Thank you. Have a good day. Bye bye.